अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं माज़रत चाहूँगा क्योंकि इतने टाइम से मेरी कोई भी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो रही है क्योंकि लाइफ में इतनी ज़्यादा मसरूफियात बढ़ चुकी है। और आज मैं ट्रैवल जर्नी करूँगा रोहड़ी से लेकर कराची कैंट तक। और मैंने जो ट्रेन आज चूज़ की है वो 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस है। दोस्तों आज तारीख़ है 21 मार्च सन 2020 और मैं सर मौजूद हूँ रोहरी जंक्शन पर। तो यहीं से मैं जर्नी शुरू करूँगा। तेज़गाम में ZC में भी कभी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं ट्रैवल कर सकूं, तो इंशाल्लाह आज की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप वीडियो में मेरे साथ एंटर लाने जुड़ेगा। दोस्तों ZCU30 की लाइट आपको विजिबल हो रही होगी, ये सामने से आ रही है 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस। आज इसकी हमेशा की तरह ZCU30 लगा हुआ है, जो कि मैंने स्पेशली ZC की वजह से मैंने टिकट बुक की है। ZCU30 6329। दोस्तों फाइनली ट्रेन पहुंच चुकी है 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस। आपको मेरे पीछे नज़र भी आ रही होगी। और मैंने जो है आज अर्जेंट में टिकट जो है वो बुक करवाई है। देखें अब जो मुझे सीट मिलती है तो मैं बैठ के जाऊंगा, वरना जो है मुझे खड़े होकर जाना पड़ेगा क्योंकि अर्जेंट में यही होता है। और अभी टाइम हुआ है 2:40 और इनिशियल विसल हो चुका है 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस का। दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। ZCU30 6309। फाइनली दोस्तों डिपार्ट कर रही है 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस। 1 घंटे की ताख़ीर का शिकार हो चुकी है रोहड़ी से। दोस्तों सामने 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस स्टेशन है और 5 मिनट पहले ये आ चुकी है।
खेरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। 2 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर रही है। दोस्तों नींद बहुत आ रही है, अभी मैं सोने की करूँगा, तो इंशाल्लाह फिर आपसे सुबह को मिलूँगा। तब तक आप जो है खेरपुर से डिपार्चर एंजॉय करें। शानदार पिकअप आप लोग फ्रेम में महसूस कर सकते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर दोस्तों। अभी भी मैं उठाऊँ नींद से, तो मैंने देखा कि यहाँ पर शहजादपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हम पहुँच चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे जो है वो बर्थ मिली, क्योंकि मैंने ओपन टिकट करवाई थी, तो इसी वजह से मुझे सीट भी नहीं मिल रही थी। बर्थ मिली थी तो मैं कुछ देर यहाँ पर बर्थ पर जो है लेट गया था। तो इंशाल्लाह आगे का सफ़र अभी जो है जारी रखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, आपको लाजमी पसंद आएगी। स्टे विद अस।
दोस्तों फाइनली डिपार्चर विसल हो चुका है 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस का। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशन है टंडो आदम रेलवे स्टेशन। आपको तकरीबन दोनों साइडों पर जो है वो हरियाली नज़र आएगी। दोस्तों बहुत ही शानदार नोचक किया है ZCU30 ने। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं। 1.5 घंटा ताख़ीर का शिकार हो चुकी है अभी तक टाउन तेज़गाम एक्सप्रेस। और ZCU30 ने जो है वो कमाल का वो जो है नोचअप किया और परफॉर्मेंस रही। आप कमेंट करके मुझे लाज़मी बताइएगा कि ZCU की परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों रात में ZCU30 को हमने देखा था, अभी हैदराबाद में दोपहर तक सुबह हो गई है। अभी देखते हैं ZCU30 किस तरह का लग रहा है, फ्रेश लग रहा है नहीं। आपको भी दिखा दूँ, मेरे पीछे आपको ZCU नज़र आ रहा होगा। ZCU30 6329 बिल्कुल फ्रेश लग रहा है जैसे मैंने रात को देखा था।
लेते अंदर कर दो। हाँ हाँ बहुत जल्दी अंदर कर दो, अंदर कर दो। बस सही है साइड में। फाइनली दोस्तों हमारी डेस्टिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, जो कि रोड़ी से हमने शुरू की थी कराची कैंट रेलवे स्टेशन तक, वो फाइनली अब जो है पूरी हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जो है आपको जर्नी, ट्रैवल जर्नी आपको पसंद आई होगी। और ZCU का आपको परफॉर्मेंस कैसा लगा मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। और आने वाले व्लॉग जो ट्रैवल जर्नी से आप कौन सी पावर में चाहते हैं कि मैं उसमें ट्रैवल करूं, तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। एक ही रिक्वेस्ट है जाने से पहले, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुँच सके।